In terms of if someone is thinking of getting into specialty papers, how would you advise कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंस, बिकॉज ये ओवरनाइट, जैसे इफ समबडी इज वेरी यूज्ड टू कमोडिटी ग्रेड पेपर, ही नोज ही कैन सेल एवरी डे 10 टन्स 5 टन्स 20 टन्स ऑफ पेपर. इट्स नॉट द केस इन फाइन पेपर. सो पेशेंस इज द गेम. बहुत प्रोडक्ट हम तो लाते हैं आज, उसका सेल एक्चुअली चालू होता है आफ्टर 3 and 4 months, बिकॉज प्रोडक्ट विल कम, सैम्पल बुक्स बनेंगे, मार्केट होगा, एंड देन द डिमांड्स गेट जनरेटेड. तो वो जो गैप होता है ना, बहुत बार 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना भी होता है. ओके, यानी पेशेंस चाहिए. पेशेंस इज द की. या तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज अगर किसी को फाइन पेपर करना है. सो फर्स्ट, डोंट कम विद द माइंडसेट ऑफ अ कमोडिटी ग्रेड. पेशेंस, हैव decent margin, not like commodity grade 8-10 रुपया, because otherwise you will never survive in the fine paper. Long run में नहीं manage because of the inventory you have to maintain. And as I was just telling you that अगर कोई पेपर डिसकंटिन्यू करना हो, फॉर एग्जाम्पल अब एक पेपर ट्रेंड से निकल गया, इट्स नॉट सेलिंग दैट मच एंड आई हैव द इन्वेंटरी. सो व्हेन आई गो टू डिस्पोज ऑफ दैट मटेरियल ना, इट विल ओनली सेल एट 30%, 25%, 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट पेपर. Correct. सो दैट लॉस यू कैन ओनली टेक if you have that margin. if you have that margin. Correct. So many a times सबको लगता है फाइन पेपर वाले का मार्जिन बहुत ज़्यादा है. सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट मेंटेनिंग द स्टॉक, कितना ह्यूज इन्वेंटरी लेके बैठे हैं. करेक्ट. उसके पीछे का एफर्ट, मार्केटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई. करेक्ट. राइट फ्रॉम द सैम्पलिंग, सैम्पल बुक्स, मार्केटिंग पीपल we have. Correct. And then if some paper is not selling that way, then how you dispose it of? So obviously every aspect of that is covered in your selling price. Right. Yeah. I think one question which people would want me to ask is कि आप ये पेमेंट का कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज थोड़ा नाम तो खराब है प्रिंटर्स का. नहीं, ऐसा आई वुड नॉट से दैट प्रिंटर का नाम खराब है. वो एक क्या बोलते हैं ना, आई ऑलवेज टेल माई कस्टमर्स एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि प्रिंटर एंड पेपर ट्रेडर्स आर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. हम पूरा दिन कैसे भी कुछ भी झगड़ा कर ले, रात को सोना सेम बेड पे सेम बेडरूम में है. सो या डिपेंड होता है कभी कभार किसी से प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट जनरलाइज दैट. एंड वी बीन इन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम परफेक्ट होते हैं. कभी वो 1-2 जन कहीं तो सब जगह हो जाता है. एग्जाम्पल मैनेज कोविड में हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है. ऑब्वियसली एज यू सेड, आफ्टर सेइंग ऑल दिस थिंग ऑल्सो, वन थिंग इज़ फॉर श्योर, पैसे का काम पैसा करता है. मैं कितना भी किसी के साथ अच्छा दोस्ती हो या रिलेशन हो, एंड ऑफ द डे मुझे भी पेमेंट घर में नहीं रखना. आई हैव टू पे टू माई प्रिंसिपल ऑब्वियसली और माई अदर सप्लायर्स एंड अदर. सो वी ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड इन टर्म्स ऑफ कि एक लिमिट के बाद हम पेमेंट नहीं देंगे. सो वी हैव दिस, हमने हमारा सिस्टम में डाला हुआ है सॉफ्टवेयर में. एवरी कस्टमर हैज़ बीन ग्रेडेड, नंबर ऑफ डेज क्रेडिट और द अमाउंट. सो आइदर ऑफ कैन नॉट ब्रीच. अगर दिन उसके पूरे नहीं हुए लेकिन अमाउंट ब्रीच हो रहा है तो भी हम बता देंगे, और विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर. विल टेल हिम दैट. So that's like how MNCs work in terms of having their customers. Yeah. You cannot bill further. Exactly. So we have these limits. So obviously आगे उसको सॉफ्टवेयर उसको आगे उसके डिलीवरी चलानी नहीं बनाने देगा. So then because obviously we want to keep our risk also as minimal as possible. Yeah. So you are a part of the association, like you were telling me something on the association part of how you've been and what's been your journey. I started very young in my association in 2002. अच्छा. I joined as a, because हमारे बॉम्बे में AGM होने वाला था, फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन का. So at that time I joined in one of the sub committees and started working in that committee, and I enjoyed it. So I became more active in my Mumbai association at that time, and Mumbai association is like a small family of around 400 members. मैं वहाँ पे फिर gradually managing committee member बना. फिर I became a treasurer there. I became a secretary there. And then eventually I went ahead and my Mumbai association gave me the post of honorary secretary of Federation of Paper Traders Association. All India? All India. Lovely. So FPTA is basically a federation body of all paper traders in India, 35 associations, roughly around 6,000 members. Lovely. So I have served there as an honorary treasurer also, and I was the secretary for 6 years. Personally, for me, it is a learning graph. I came across various people from across India, all legends in their own way, and I'm sure. learned a lot. All my seniors, काफ़ी correspondence होता था गवर्नमेंटों के साथ.
अबाउट वेरियस टॉपिक्स, टैक्सेशन हो या कभी कभी एंटी डंपिंग कोई प्रोडक्ट पे ला रहे हैं, सो वहाँ पे भी सीखने को मिलता था. इंटरेक्शन विद द इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो यहाँ पे इपमा और इंडियन एग्रो रिसाइकल वेरियस एसोसिएशन, साल में 1-2 बार उनसे भी मीटिंग होती थी. सो पर्सनल लेवल पे एज अ आई वाज, सिंस आई वाज आल्सो ग्रोइंग, माय बिजनेस वाज आल्सो ग्रोइंग, एसोसिएशन का ये भी एक बेस मुझे मिला वेयर आई केम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल एंड नॉलेज शेयरिंग हुआ, तो उससे भी मेरा ग्रोथ हुआ. एंड आई वुड से कि एसोसिएशन इज अवर लाइक इट इज वेरी यूजफुल, यू नो, एक एसोसिएशन का पार्ट होना. हाउ डज इट हेल्प? फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इंडिविजुअल, अगर समझो आज कल उठ के गवर्नमेंट बोलेगी कि मुझे कोटेड पेपर पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लाना है, मैं एक लेटर लिखूंगा, ईमेल करूंगा, उसका एक वजन नहीं, यानी ओके ये नोट होता है, बट एज एन एसोसिएशन ऑफ 6,000 members, व्हेन यू राइट टू अ गवर्नमेंट हैज टू टेक अ नोट ऑफ इट. Correct. So we help in resolving the problems of our fellow members. Any example? Like for example, हमारे pan India various associations have this arbitration committee, हाँ. wherein अगर कोई प्रॉब्लम होती है, as you were mentioning कि समझो मेरा कोई प्रिंटर मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है, मेरा कोई कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है, तो if I go and complain to my association, Okay. they have a format, so I have to give them all the details in that format and give my form to the association. There is a committee, there is a chairperson for that committee. They will review the form on the merit of it, and then they will write to the opposite party, Okay. asking them to give their side of the story, because obviously they cannot go with one side of the story. Right. So we write to them and we request them, if this is the complaint we got against you, so if you can give us time, if you can come to our office in association, or you call us, then 3-4 members of that committee will go and visit that party and give your part of the story. Correct. If they agree, then that meeting is fixed. Individual पहले हो जाती है, फिर together we try to arbitrate. Lovely. Majority cases में we come So, to a so this resolution. is a amazing help for these small paper traders. Yeah, जिन it लोग is. अटक जाते हैं. 100%. And are all the paper traders aware of this kind of a service? Yeah, they are aware. I would say कि full utilization अभी भी नहीं होती. I don't know, there is some hesitance. in डर लगता होगा कि मेरा कस्टमर ले जाएगा. कस्टमर ले जाएगा या मेरा नाम आ जाएगा और इसको इतना पैसा, इतना, तो वो टाइप का माइंडसेट है. बट आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी. पैसा बाकी है, अपना ही पैसा है, मेहनत का बाकी पैसा है, है. तो आई थिंक वी शुड ट्राई एंड So but then how does it work?